इसमें पहले एक्सरसाइज में you have to memorize some formulas. If you have a cos function and addition of two angles, suppose that angles are alpha and Hamdan, ऐसा बोलो. Cos alpha plus beta, addition of two angles gives you cos alpha, cos beta, sin alpha, sin beta. If either is minus, तो इधर plus. तो opposite आते हैं इसमें. While in sine, it is sin alpha, cos beta, इधर plus है तो इधर भी plus है. Cos alpha, sin beta. इसमें opposite आता है. और this is minus, so this is minus. इसी तरह tan का भी है. Addition of two angles. Tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha tan beta. अगर माइनस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. बस ये फॉर्मूलाज याद रखने. That's it. This is trigonometric function of two angles when they are added. Addition of two angles. इसमें आपको यही दिया हुआ है कि find the values of cos alpha plus beta minus alpha plus minus beta and सबका मालूम करो with the given pair of angles. ये आसान बात है. बस एंगल्स की वैल्यू डालनी, कैलकुलेटर से cos या sin लेना और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जो भी हो. Then we're going to solve just one of them. Let's solve 5. It doesn't matter. दोनों सेम में रखो, बस इतना कर रखो. If they are radian, keep the other as well as in radian. If the other is in degree, that. But आप prefer करो keeping it in degree. Reason for that is कि आप कैलकुलेटर से जब आप सपोज अगर आप cos pi by 4 by pi 3 लोगे तो रेडियन कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा. तो इससे बेटर है कन्वर्जेंस है कि आप सब कुछ डिग्री में रखो और एंगल ले लो. सो कॉस जो भी होगा. ओके. सपोज मैं एक सॉल्व करता हूँ. अल्फा की वैल्यू दी है 4 पाई बाई 3 एंड बीटा दी हुई है पाई बाई 6. कन्वर्ट कर लो पहले. सबसे पहले 4 into 180 divided by 3. याद रखना when you are converting you will put the value of pi as 180. The answer is 240 and this will be 30. So एक angle 40 or 240 और एक 30. That's it. So if I take sin alpha plus beta, it will be sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. The sin alpha, which is 240, or cos beta, which is 30, cos alpha, which is 240, and sin beta, which is 30. The sin 240 is how much? Oh, अलग अलग कर लो. फ्रैक्शन में नहीं आया. फ्रैक्शन में बताओ. अंडर 3 minus under 3 by 2. Cos 30 under 3 by 2. Cos 240 1 by 2 minus 1 by 2. Sin 30 1 by 2. That's it. Under 3 into under 3 will be 3 with the negative because here negative. Or this 4. This will be minus 1 by 4. So it will be minus 4 by 4, which will be minus. Yes, Anna. Don't waste your time on this. But just itne questions leave there so that you can practice these formulas. Okay. By the way, chapter 8 and 9 book के सबसे easiest chapters है. Easiest chapters. So ये इतने hard नहीं होने वाले. Okay. ये आपको easily समझ भी आएगा और easily solve भी हो जाता है. Okay. Question 2 है कि find the exact value of cos 15 by using cos. ये भी आसान है. यानी cos 15 की वैल्यू उसको चाहिए. cos 15 की उसकी वैल्यू चाहिए, राइट. कैलकुलेटर में डालो यू गेट एग्जैक्ट वैल्यू. बट वो बोल रहा है कि यूज फॉर्मूला यूज करो क्या कि cos 15 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30. तो cos अल्फा माइनस बीटा और फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करके राइट. डजंट मेक सेंस. These are just practice of the, what do you call that, these questions. Okay, so was good. So ये सारे questions खुद करना.
ओके, क्वेश्चन 3 भी खुद करना, सेम ही है। क्वेश्चन 4 को देखो। cos this and this, rewrite the expression as single। इसको क्लोज करना है, फॉर्मूला है बट इसको क्या करना है, क्लोज। सिंपल है ये भी। जैसे हमारे पास है cos, सॉरी, cos 60, cos 30, sin 60, sin 30, ओके, सॉरी 30 नहीं है, 6 थीटा और 3 थीटा, 6 theta and 3 theta. Okay, so now cos alpha, cos beta, sin alpha, sin beta. So it is cos alpha plus beta. सिंपल, बस क्लोज करना है इसको। ये है cos alpha minus beta, सेकंड वाला। ये भी आसान ही है, ये tan का है, ये भी tan का है, ये sin का है। या इसमें ये आएगा tan alpha plus beta। ये माइनस वाला है, ये प्लस, ये माइनस वाला है, ये प्लस। Let's do question number 5। सबर कर, ये रोहान को थोड़ा डांटते हैं। 4 sin alpha is equals to 4 by 5, tan beta equals 5 by 12, with terminal side of quadrant 2 find cos and sin। वो बोल रहा है कि दोनों हैं, ओके, दोनों की टर्मिनल साइड क्वाड्रेंट 2 में। हमें कितने एंगल्स दिए हैं, दो एंगल्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा भी क्वाड्रेंट 2 में और बीटा भी क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 का मतलब क्या हुआ कि बोथ आर इन दिस क्वाड्रेंट, अल्फा एज वेल एज बीटा। अब वी नो दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, याद है ना, ऑल पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। रिमेंबर, थोड़े थोड़े याद है। tan cot cos, हाँ एसटीसी से याद किया था, एसटीसी, साइन कोसिक, tan cot और cos से। ओके, वो जहन में याद रखते हुए ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन विल बी पॉजिटिव, राइट, एंड बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो देखो tan बीटा नेगेटिव इसलिए दिया है बिकॉज इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और tan बीटा विल बी negative in second quadrant because beta be in the second quadrant। okay, keeping that in mind, वो बोल रहा है कि find the value of cos alpha plus beta and cos alpha minus beta। अब आपको cos alpha plus beta और cos alpha minus beta की वैल्यू मालूम करनी है। now to find cos alpha plus beta की वैल्यू, what do we need? if we expand this, we need cos alpha cos beta, sin alpha sin beta, so we need cos alpha cos beta sin alpha sin beta. But the problem is we only have sin alpha, we don't have sin beta. Don't have sin beta. Now what you have to do is, using this guy and this guy, you have to find the other trigonometric function as well. और फिर उसको यूज करके इधर डालेंगे. So now, from sin alpha I'm going to find sin beta. Then from tan beta I'm going to find, sorry, from sin alpha I'm going to find cos alpha. From sin alpha I'm going to find cos alpha. From tan beta I'm going to find sin as well as cos। एक चीज याद रखना, जो भी एंगल होगा उसके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन। साइन पता है, कॉस और टैन नहीं है। टैन पता है, साइन और कॉस नहीं। सो यू हैव टू फाइंड द अननोन्स, क्योंकि उसके लिए इसमें चाहिए हमें जरूरत। सो हाउ फ्रॉम साइन अल्फा विल फाइंड कॉस अल्फा, व्हाट डू यू थिंक? फ्रॉम साइन अल्फा कॉस अल्फा कैसे मालूम कर सकते? वी नो दैट, नहीं मैं बता, कॉस हमें पता है कि कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। डू यू रिमेंबर दिस? पता है ना, वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो कॉस अल्फा इज जस्ट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
खलास सिंपल अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी 4/5 so 16 by 25 LCM लोगे this will be 9 by 25 under root of 9 by 25 is 3 by 5 बट इधर एक चीज याद रखना इधर है प्लस माइनस इधर क्या है प्लस माइनस फ्रॉम द क्वाड्रेंट इटसेल्फ यू विल डिसाइड कि इसको प्लस लिखा जाए या माइनस अब सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा राइट cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है so you will write this as negative not positive बस ये ध्यान रखना है you get it excellent so we got cos alpha as well as sin alpha ये दोनों मिल गई so we're done with this too but now we need cos beta and sin beta but only we have tan beta from tan beta we have to find sin beta and cos beta what do you think we should do but we don't have both of them यानी आपके पास sin भी नहीं है cos भी नहीं है so it won't work वो अल्फा है बीटा है फ्रॉम tan का रिलेशन था secant के साथ so from tan find the secant और secant क्योंकि cos के रिस्पेक्ट so you will get cos to get it so what we will do is we'll use कि 1 plus tan square बराबर होता है secant square के right square root on both sides so 1 plus tan square beta is equals to secant beta तो under root 1 plus 5 by 10 okay secant चेक करो ये कितना आता है 1 plus 25 by 100 no sorry this is 12 my bad wait not hard this is 12 25 by 144 1 plus 25 by 144 and the root of 169 by which is 13 by 12 I think right अब देखो साइन इधर प्लस माइनस है रिमेंबर दैट ओके प्लस माइनस इग्नोर नहीं करना बट एज इट इज साइन सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है पॉजिटिव सो वी विल कीप इट एज पॉजिटिव नाउ साइन आ गया सॉरी ये साइन थोड़ी है सीकेंट माय बैड ये क्या है माय बैड ये आया सीकेंट और सीकेंट सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव गलत किया था अभी थोड़ी देर में गलती हो जाती वी गॉट सीकेंट नॉट साइन अब सीकेंट जो है रेसिप्रोकल है कॉस का तो वी कैन राइट कॉस बीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज -12 by 13 so you got cos now we know that tan theta equals sin theta beta by cos beta true तो bring cos here so tan beta क्या था -5 by 12 sin beta क्या था we have to find cos beta क्या था -12 by 13 bring it here so 12 cancel will be 5 by 13 sin beta की वैल्यू क्या आई है 5 by 13 so खलास we got cos beta भी आ गया और sin beta बस इसमें भी वैल्यूज डालो add them subtract them and that's your answer so all these things just to get alpha sin beta sin all of them तो ये वही at the end practice है एक और तरीका मैं सिखाने लगा हूँ to find these trigonometric functions ये तो फॉर्मूले से मैंने किए there is one other way to do it as well सपोज अगर मेरे पास साइन है ना साइन अल्फा मेरे पास साइन अल्फा दिया था 4/5 right and it was in the quadrant second quadrant right so you draw a line okay sorry make a triangle here make what triangle in the second quadrant okay right angle triangle bounds third quadrant why second quadrant because alpha is in second quadrant as he said now sin क्या होता है perpendicular divided by hypotenuse right so perpendicular is 4 hypotenuse is 5 use Pythagoras theorem to find base so suppose b है तो क्या हो जाएगा 5 square is equals to 4 square b square so 5 square minus 4 square is equals to b square there will be 9 so b will be 3 now you will write b because b is to the left so you will write -3 so you got ट्रायंगल तीनों मिल गए सो फ्रॉम डायरेक्ट इससे आप cos अल्फा मालूम कर सकते हो cos अल्फा क्या होता है बेस डिवाइड बाय हाइट तो ये भी एक तरीका है कि इफ यू फाइंड द ट्रायंगल तो यू कैन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रादर देन यूजिंग द इक्वेशन समझ आई सो दो तरीके इसको सॉल्व करने के
यानी फाइंडिंग द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये साइन का है, बीटा का सेपरेट बनाना। ये साइन का मैंने बनाया है, अब बीटा का बनाते हैं। बी, बीटा का क्या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास? बीटा हमारे पास tan था, राइट? tan वाज -5/12। tan क्या होता है? बेस, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। व्हाई डिड आई टेक बेस नेगेटिव? क्योंकि लेफ्ट पे। परपेंडिकुलर पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि अपवर्ड है। और हाइपोटेन्यूज मालूम कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट करो, देयर विल बी 13 आई थिंक। प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट 13 आएगा। ओके, तो इस तरह इसके भी बाकी सारे न्यूमेरिक फंक्शन ट्रायंगल से मालूम। वेरीफाई sin pi by 2 minus alpha is equals to cos alpha। ये तो आसान है। sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाओ तो इसकी इक्वल हो जाएगा। गाइस प्लीज ऐसा बोलो। sin अल्फा माइनस बीटा फार्मूला लगाओ तो इसकी इक्वल हो जाएगा। देखो, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ऐसे ही होता है ना? मतलब यानी वो बोल रहा हूँ ना, डिफॉल्ट अल्फा बीटा होता है, तो ये अल्फा इधर आ बीटा इधर। नालायक, समझ आ गई? साइन पाई बाय टू क्या होता है? 90। साइन 90 इज 1, तो आ जाएगा cos अल्फा। cos 90 इज 0, तो क्या आ जाएगा? cos अल्फा विच इज राइट हैंड। बड़ा आसान है। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी cos का फार्मूला लगाओगे ना, cos अल्फा माइनस बीटा का, तो you get minus cos alpha. Okay? Look at question 3. I'm going to solve 3. Cos alpha plus pi by 4, इसकी ये भी ऐसे तरह ही है, एक्सपेंशन करो। No, just expand this, you will get the right hand side. Look at this. हाँ, left hand side expand करो। Let me do it. Just cos alpha cos beta minus cos alpha, sorry, sin alpha sin beta. Okay? Cos alpha cos pi by 4, ये है pi by 4 is 45. Cos 45 is 1 over under root 2. This will be cos alpha over under root 2. This will be sin pi by 45 is also 1 over under root 2. This will be sin alpha over 1 over under root 2. तो under root 2 कॉमन ले लो, तो cos alpha minus sin alpha वही आ गया। ओके, ये आसान है, you can do this by yourself। 4 में भी एक्सपेंशन करो, you will get this। 5 में भी एक्सपेंशन करो, you will get this। 6 में इसने कुछ डिफरेंट पूछा है, उसने 3 टर्म्स मांगे कि पहले तो प्रूव करो, दो यानी पहले उसने प्रूव किया कि प्रूव सॉरी ही आस्क्ड कि प्रूव दिस इक्वल्स टू दिस एंड देन आफ्टर दैट प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, इधर देखो, पहले मैं इफ यू एक्सपेंड, मैं लिख लेता हूँ एक बात जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और उसने 1 माइनस 10 गामा दिया है। ओके, इसमें पहले पार्ट में इफ यू जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड यू एक्सपेंड, यू विल गेट दिस। व्हेन यू गेट दिस you can turn it into this. You do this, you will do this part by yourself. I'm going to do this part. इसमें फार्मूला लगाना है और you will get this anyways. इसमें कैसे जाना है वो भी आसान है, but I'm going to do it. हमारे पास है 1 plus 10 gamma, sorry, 1 plus 10 gamma by 1 minus 10 gamma, right? तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus 10 is sin by cos, right? And sin by cos.
take an LCM, this will be cos sin by cos, and इस तरह ये होगा cos minus sin by cos. Cos कर जाएगा, you will get right answer. Got it?
इधर देखो, इधर देखो, साइन 90 प्लस अल्फा कॉस 360 cos alpha 180 270 minus alpha cos 90 plus alpha. Okay, this is this is 1 into 90 plus alpha. Okay, this is 1 into 90 plus alpha, right? You can write 90 as 1 into 90. तो ये किस में चेंज हो जाएगा? cos में. तो ये आ जाएगा cos alpha. कौन सा क्वाड्रेंट आता है? 1 और अल्फा सेकंड. सेकंड में साइन क्या है? पॉजिटिव. तो रिमेन cos as it. माइनस माइनस 360 क्या होता है? 4 इंटू 90 माइनस अल्फा, राइट? कोरेशन में चेंज होगा? नहीं, राइट? ट्रू. और कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. तो इट विल रिमेन पॉजिटिव. कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है. बाकी सारे कॉस पॉजिटिव होता है ना फोर्थ में. फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और उसके रेसिप्रोकल्स. ओके, दिस रिमेन्स एज इट इज. एस टी सी. हाँ, वो नहीं काउंट करते एस से. एस टी सी. ओके, कैन आई राइट 180 as 2 into 90 minus lambda minus gamma alpha, right? साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन अल्फा डायरेक्ट. 270 can be written as 3 into 90 minus lambda minus alpha. तो कोरेशन में चेंज होगा? वालेकुम अस्सलाम. और कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड. थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो ये नेगेटिव आएगा. ओके, यू गेट इट. 1 into 90 प्लस लैम्डा. कोरेशन में चेंज होगा? साइन. कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरा. दूसरे में कॉस क्या है? नेगेटिव. ओके, कॉस माइनस कॉस कट जाएंगे. आई एम लेफ्ट विद कॉस अल्फा माइनस कॉस, सॉरी माइनस साइन प्लस साइन, ये भी कट जाएंगे. हर पास आ जाएगा माइनस कॉस. कॉस डिवाइड बाय कॉस. ओके, क्वेश्चन 2 3 देखो. हर पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा साइन अल्फा प्लस डिवाइड बाय cos cos अल्फा cos बीटा. tan अल्फा प्लस tan बीटा से प्रूव करने के ये आता है. इजी है, बस tan का फॉर्मूला लगाओगे, ऐड करोगे, देन यू विल गेट दिस. In other words, just expand this, and if you divide both of them, you will get this. This is much easier, right hand side. If I take the right hand side, sin alpha plus beta का फॉर्मूला क्या है? sin alpha cos beta cos alpha sin beta, right? Divided by cos alpha cos beta. It divides both of them. When it divides the first one, so cos beta will cancel, but sin alpha or sin cos beta cos alpha will be tan alpha. But when it divides the second one, the what will cancel? Cos alpha will cancel. You are left with sin beta or sin cos beta, which is same, easy as that, right? Is equals to left hand side. You get it? Easy, right? This one is a little bit, it's not that difficult, but important. Sin alpha plus beta, sin alpha minus beta. Expand this, will be sin, sorry. हाँ, formula ये open करना. तो sin alpha cos beta cos alpha sin beta sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. True? Both of them open किए मैंने. अब if you look at this is a plus b, a minus b.
So you can write that a square minus b square. So it will be a square minus b square. True? So far so good. Ab, how can you convert this into cos beta minus cos alpha? That's the trick. Hey, expansion तो हमने कर ली, multiply भी कर ली. But now you have to convert this term into cos beta minus cos alpha. Look at this. I need this guy here, right? Cos beta चाहिए ना मुझे इधर. Minus क्या चाहिए इधर? Cos alpha, right? I don't need sine square beta here and sine alpha square here. What I'm gonna do, I can instead of sine square alpha write 1 minus cos square alpha. ये अपनी जगह जो रिमेन जो चाहिए वो उसको एज इट इज रहने दो. इधर से गौर से देखो यार. और साइन स्क्वायर बीटा हमें नहीं चाहिए, so I can write 1 minus cos square beta. True? Now multiply cos square beta into 1, that will be cos square beta, and cos square beta into this will be cos square beta cos square alpha. और इस तरह cos square alpha minus cos square alpha minus minus will become plus, okay? And cos square beta. This and this are same. They will cancel each other. Okay, so hence you will get cos square beta minus cos square alpha, which we needed. You get it? Easy, right? Up now from this you have to convert into sine square alpha minus sine square beta. How would you convert this? Just instead of cos square beta write 1 minus sine square beta, and instead of cos square you can write 1 minus sine square alpha. So it will be 1 minus sine square beta minus 1 plus sine square alpha. So minus 1 plus 1 will cancel, and sine square alpha and negative sine square beta, which is the right answer. Halas, you got this as well as this. You get it? Simple as that. In question number 5, you just expand the formula. इसमें look at this question number 5. It is tan x plus y divided by cot x minus y. Right? इस तरह है ना? Can I write tan x plus y? Sorry. This is cot. Can I write 1 by cot? This is 1 by cot, right? As tan x minus y. इस 1 by cot की जगह मैंने tan x minus y. Now expand x tan x plus y and alpha plus beta and tan alpha minus beta and multiply them, you will get the right hand side. Okay? यानी tan alpha plus beta का फॉर्मूला क्या है? x plus y का. Tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y into tan x but with the subtraction, and here tan x tan y. बस plus minus का फर्क है. Now this is a plus b into a minus b, so that will give you tan square minus y square, and denominator will be same scenario. A minus b, a plus b, so it will be 1 square minus tan x tan y square, which is your right hand side. You get it? Look at question number 6. Same for number 6. हाँ, 6 is kind of different. 6 में आप क्या करोगे? You will expand cos alpha plus beta and denominator में cos alpha minus beta. But then you will look at such a term जिसको sub से divide करके, here you should get 1. What do I mean by that? Let me solve this one. Anyways, हमारे पास है cos alpha plus beta. अब्दुल्ला नहीं आ रहा guys? नहीं आ रहा? हमदान को मैं तरले कर करके बुलाया, वो आया नहीं रहा. ये हमदान की भी तो खराब है. उसको बोल cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Now if you look carefully, here we have 1. तो हमें इस जगह पे 1 चाहिए, right? इस जगह पे हमें क्या चाहिए? How can I create that one?
Just divide all by cos alpha divided by cos alpha cos beta. Each and every term से किसको divide करो, किससे divide करो, cos alpha cos beta. So if I divide this cos alpha, this term by cos alpha cos beta क्या आ जाएगा, 1 और इसको cos alpha और cos beta से divide करो तो क्या आ जाएगा, cos alpha sin alpha और cos alpha tan alpha हो जाएगा, sin beta और cos beta tan beta हो जाएगा, cos alpha cos beta इससे स्क्वायर होती है ये भी 1 हो जाएगा, और same goes here tan alpha tan, which is the right answer. Okay, question number 12. हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180. Now we have to prove cos alpha cos beta cos. What should we do? What do you think? 1 plus beta is equals to gamma उधर ले जाओ 180 minus gamma. Okay. Okay. Take tan on both sides. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, tan का. Can I write 180 as 2 into 90? Is it this odd? Even. कोरेशन में चेंज नहीं होगा. ट्रू. और कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है. ओके, तो हमारे पास आ जाएगा और फिर माइनस पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा 1 2 और इसमें रह जाएगा. उसको समझ है, आपको समझ आई. tan बीटा इसको उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड पे, तो माइनस tan गामा tan अल्फा tan बीटा मल्टीप्लाई करो माइनस tan गामा और माइनस माइनस प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गामा हो जाएगा. tan गामा को इधर ले जाओ, tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan अल्फा tan बीटा tan. लेवल है, सो रहे हो, अब दोबारा देखो गामा कहाँ से आया, अब पता चल जाएगा. डिवाइड बाय 2 करो. ओके, तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 90 माइनस गामा बाय 2. अब क्या लेना है दोनों साइड पे, कॉट चाहिए हमें. कॉट का फार्मूला ही नहीं है. ओके, tan का फार्मूला क्या है, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2. Can I write this as 1 into 90? 1 into 90 कोरेशन में चेंज होगा, कॉट. कौन सा क्वाड्रेंट है,
पहला पहले में क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है. हाफ है, दिस जस्ट एन एंगल, जस्ट कीप इट एट एंगल है, कोई उससे हाफ से कोई उसका रिलेशन नहीं है. दिस कंसिडर दिस एज एन एंगल, सेपरेट एंगल है. डोंट टेक टू एज उससे कुछ फर्क पड़ेगा. दिस बस पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है जिसमें बस रूल अप्लाई करो. वन ऑड है, कोरेशन चेंज होगा एंड दिस विल रिमेन एज इट इज. और साइन और tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव कॉट गामा बाई 2. नाउ हमें हम ये सारी चीजें किस में चाहिए? Excellent. We need them in quad. Yes, and then take LCM and cut whatever. We did this in the previous section as well. So 1 over tan alpha by 2. 1 over tan alpha by 2. I like. सो रहा है ये बंदा. This guy is, yeah, next part. He's sleeping. He's sleeping. Okay. LCM low will be cot beta by 2, cot alpha by 2, cot alpha by 2, cot beta by 2. Sorry? LCM low, cot alpha by 2, cot beta by 2. So cot alpha by 2, cot beta by 2 minus 1. True? Is equals to cot gamma by 2. True? These guys will cancel with each other because they are the same. So हमारे पास आ जाएगा cot beta by 2, cot alpha by 2, cot alpha by 2, cot beta by 2 minus 1 equals cot gamma by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. समझ आ जाएगा cot बीटा बाई 2, cot अल्फा बाई 2. ये cot इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस cot गामा बाई 2 इस माइनस 1 के साथ. और इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा cot अल्फा बाई 2, cot बीटा बाई 2, cot गामा बाई 2. ऑफ कोर्स जब ये उधर जाएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 1 के साथ होके ये आ गया और इनके साथ ये आ. ओके, अब नेगेटिव को इधर ले आओ, तो कॉट इसको रीअरेंज करो अल्फा, सॉरी, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है, सो दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाई विद इट, यानी स्क्वायर नहीं हो सकता. यानी कॉट गामा बाई 2 इंटू कॉट अल्फा बाई 2 कैन नॉट मेक स्क्वायर. इफ अनलेस ये कॉट गामा बाई 2 होता, वो भी कॉट गामा बाई 2 होता तो हाँ, बिकॉज दे कैन नॉट बी स्क्वायर्ड बिकॉज द एंगल इज डिफरेंट. ओके ओके, अब कॉट रीअरेंज करो. कॉट अल्फा बाई 2 पहले लिखो, कॉट बीटा बाई 2 बाद में लिखो, और cot gamma by 2 and cot alpha by 2, cot beta by 2, cot gamma by 2. So hence proved. क्वेश्चन नंबर, इस तरह एक पोल है. ओके ओके, और वायर से बंधा हुआ है. शॉर्टर वायर इज 3 मीटर fastened 3 meter above. The shorter wire is fastened to the pole 3 meter above the ground. 3 meter above the ground इधर fasten है, और the longer is 7 meter above the ground. 7 meter above the ground इधर कहीं fasten. ओके, लगा हुआ है. इसको क्लोज कर दो. दिस इज द पोल. ओके, रख दो. दिस इज द पोल. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द एंगल दैट शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड. शॉर्टर वायर का एंगल मालूम करो. ये कितना है? वी डोंट नो. दिस इज 3 एंड द टोटल इज 7. इसके लिए नॉट 7.
You know only this guy. Do we know the length of the wire? Telephone pole is braced by two wires that are both fastened to the ground at 3 meter from the base of the pole. हाँ ये भी 3 है. ज़्यादा दूर नहीं बनाना चाहिए था मुझे. ये भी 3 है. ये भी 3 है. So first question, what is the measure of the angle of the तो ये theta और मालूम करना है. So how would I find this theta? What do you think, Ayan? Using this triangle. 10? 10. 10 perpendicular इस triangle का perpendicular divided by यानी P divided by base. क्योंकि we know perpendicular as well as base of this triangle. Perpendicular is always opposite to theta. 90 के opposite hypotenuse होता है and the remaining is base. So that will be 3 divided by 3. So theta will be equal to tan inverse 1 which is 45. So shorter wavelength कितना angle बना रहा है? 45. Next question, let theta be the measure of the angle at the longer wire mixed with the ground. Find the sine and cos of that. So we have to find this angle. Let's call it, he called it theta. Well, let's call us this alpha, okay? क्योंकि उसने बोला इसको theta बोलते. Now we know that उसका base और perpendicular क्या है? Given है. One is 7, the other is 3. So tan of theta will be 7 divided by 3, perpendicular divided by base for the bigger triangle, okay? So theta will be tan inverse 7 by 3. How much you get? 66.8 degree. अब इसका cos of sine चाहिए उसको. So cos of 66.8 लो and sine of 66.8. 0.39 अब sine ले. वो ये लिखा है ना, find the sin theta और cos theta. तो आप किधर घूम रहे हो? A में हो. ये A था, ये B था. Now C. C says that find the cosine of the angle between the wires where they meet at the ground. Find the cosine of the angle between the wires where they meet at the ground. तो cosine तो इसके एक का तो मालूम कर लिया है, वो 0.39 और इसका cosine क्या आ जाएगा? Cos of alpha, which is cos of 45, will be 1 over under root 2. Okay? Cos. उसका full form लिखा है. Allah. Find to the nearest degree the measure of the angle between the wires. हाँ, measure of angle between the wires में किधर एंगल बन रहा है? यानी इसको ड्रैग करो इस तरह, ये एंगल. What he is trying to say? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी ये पोल है और दोनों 33 मीटर अवे और एक 7 पे अटैच्ड है और एक 3 पे अटैच्ड है. हमने जब 3 वाले का एंगल मालूम किया तो क्या आया था? 45. जब हमने 7 वाले का एंगल मालूम किया था तो क्या आया था? 66.8. तो दोनों में एंगल क्या आ जाएगा? 66.8 minus 45. How much you get? Minus 45. 21.8. Yeah, of course, क्योंकि ये 66 है और ये 45 है. So this angle would be 21.8. That's an easy thing. Diagram.